Assalamu alaikum. Welcome to the 11th lecture of natural language processing. So I hope all of you are doing well. I only see a few people connected right now. So today we will continue with our discussion on text classification. Last time we had discussed text classification using the Bayes rule. We talked about how that relates to language modeling or class-specific language modeling. And then we started talking about the multinomial naive Bayes. So today we will start with these two ideas again and move on to how to evaluate classifiers for text classification. And if we have time, we will also discuss ideas regarding features for sentiment classification. So at the end of today's lecture, we have a quiz at 1:35. So as usual, the quiz is 10 minutes long, and you have a window from 1:35 to 1:50 to attempt the quiz. So I have also announced the date for the midterm exam. Your midterm exam is March 6 from 11 to 2 p.m. So the midterm would contain material till the 13th lecture, which is the first lecture of next week. So any questions before I get started? Okay, are there any questions? Okay, so if there are no questions, I will get started. So we were talking सर वो about मैंने text classification last time. सर And वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था आपसे किसके बारे में? सर प्रोजेक्ट के बारे में वो स्पीक डिस्कशंस आपके साथ रखनी है टीए के साथ फॉर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट टीए के साथ भी कर सकते हैं, आइडियली मेरे साथ भी एक दफ़ा ज़रूर करें। आपको मेल कर दें बस उसके लिए कोई आइडिया है तो मेल कर दें, और जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें आप मिल लें, या कोई और आप टाइम चूज़ करना चाहते हैं तो वो मुझे ईमेल कर दें। ठीक है सर ठीक है, एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक्चुअली मेरे ख्याल से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से पहले ना, लेट मी एड्रेस ए कपल ऑफ थिंग्स। आप लोगों ने रेज किया था कपल ऑफ मिस्टेक्स दैट आई मेड. So in quiz 2, there was a question on the overlap coefficient. So the overlap coefficient actually is less commonly used for natural language. It is used for sets more commonly. Although I mentioned this in the context of NLP as well, the more common technique is the normalized longest common subsequence similarity. So remember, some measures are dissimilarity or distance, and some measures are similarity. And of course, both of them have a complementary relationship. Distance larger means smaller similarity. So in the quiz 2, I think we had a question to compute the normalized LCS between two terms, two strings. One was aggregate and the other was greater. So I mentioned in class that LCS is the length of the longest contiguous sequence of characters that overlap. But it is the length of the longest common subsequence, and subsequence can have some gaps in them. So, but they should be in order. So in this
example, for example, if you start from the left, you notice that GRE from aggregate is similar to, or it overlaps with GRE of greater. And then we have a G in one, and then you have an, so in one, but in other, after that, ATE is also similar, aggregate and greater. Okay? So in essence, if you think of the subsequence that matches a GRE ATE. So the length of this sequence, of course, is 6. Okay? So, and of course, this is not a contiguous sequence. There was a gap in between, which is a G in aggregate. But that is how the longest common subsequence is computed. And of course, the whole formula for normalized LCS is, in the numerator, you have the length of the longest common subsequence, which is 6. And on the denominator, you have the length of the shorter string. The shorter string is greater, which is of length 7. Okay? And this will give you your similarity, which would be about 0.8 something. So this is actually a similarity. Higher the number, the greater the similarity between the two strings. So this is the more common way of computing similarity between strings. Now the question is, LCS, as I mentioned here, is the common subsequence. So as such, it might have gaps. So finding such subsequence itself is a non-trivial problem. Okay? So if you are just finding one contiguous overlap, that is somewhat easier. But finding a subsequence which might have gaps is more harder. And actually, you have to go through the entire minimum added distance algorithm before you can find this LCS. So minimum added distance में हम क्या करते थे? We filled out that table, 2D table होता था, ठीक है? Computational complexity n into m थी, where n is the number of characters for one string and the m is the number of characters for the other string. And the final minimum added distance was the cell value at nth row and nth column, ठीक है ना? But जब हम बैक ट्रेस करते थे, उससे हमको अलाइनमेंट भी मिल जाती थी, राइट? So वो जो alignment है, that will tell us what is the longest common subsequence. जो हम diagonal जब नीचे आएंगे और जहाँ diagonal में कोई substitution नहीं हो रही, same character है, तो that is the alignment. ठीक है? And the rest, wherever you have a gap, वो insertion हो जाएगी या deletion हो जाएगी, and then you have a matching without any substitution. All such strings that match from left to right, all such characters that match from left to right will form the longest common subsequence. Okay? So in other words, the min added distance problem has to be solved to find LCS. Okay? It is not trivial. Of course, for small strings, आप quickly देख सकते हैं, but in general, it is not that trivial. You have to go through the entire process. ठीक है? Is this clear? तो ये क्विज 2 मैंने अपडेट भी कर दिया है, वो जो सॉल्यूशन अपडेट मैंने पोस्ट किया हुआ था LMS पे. So one question, overlap coefficient में हम minimum number of word characteristics you कर रहे हैं divide, why not the maximum? मिनिमम किधर, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? Yes sir, denominator में. उसमें मिनिमम ही होता है, बट ऊपर जो है ना वो सेट, जनरली वो सेट के लिए यूज होगा. फॉर एग्जांपल एग्रीगेट एंड फॉर एग्जांपल ग्रेटर, आप यू अज्यूम दैट दीज आर टू सेट्स, और सेट्स का जो इंटरसेक्शन है उसकी लेंथ फिर न्यूमरेटर में होगी, ओवरलैप कितना हो रहा है. ठीक है?
तो मतलब इट हैज स्लाइट डिफरेंट डेफिनेशंस, तो यही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी दैट इन क्लास आई डिडंट क्लैरिफाई, तो उस वजह से सर जी, मैं एलसीएस थोड़ा क्वेश्चन सा ये है कि गलत बताया गया। डिनोमिनेटर में यूनियन नहीं होना चाहिए दोनों सेट्स का? यूनियन में आपके पास क्या आएगा, वो तो सारे करेक्टर्स आ जाएंगे ना। सर उसमें मेरे ख्याल से एग्रीगेट आ जाएगी, क्योंकि वो लार्जर सी हाँ काउंट नहीं, आ बट जाएगी। सिमिलरिटी हम निकाल रहे हैं ना, तो वी नीड टू फाइंड दैट अ कॉमन इन बोथ। ठीक है ना, जो जितना ज्यादा कॉमन होगा उतनी ज्यादा सिमिलरिटी होगी ना, तो ओवरलैप में इंटरसेक्शन टिपिकली यूज होता है। बट ये जो मेजर है, ओवरलैप इज मोर कॉमन फॉर सेट्स, ऑल्दो इट कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग्स, बट मोर कॉमन फॉर सेट्स। तो सेट्स के लिए जो एलसीएस ज्यादा कॉमन है, नॉर्मलाइज एलसीएस। एंड एज आई सेड, एलसीएस ढूंढने के लिए पहले मीन एडिट डिस्टेंस भी आपको कंप्यूट करना पड़ता है, तो सम डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ अप्रोच लगानी पड़ती है टू फाइंड द कॉमन सब सीक्वेंस। एनी अदर क्वेश्चन? इसी तरह एक और था, वो तो खैर आई थिंक इट स्लिप्ड फ्रॉम माय साइड, और फिर मैंने क्विज में भी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी वो क्या इशू है, विच वाज द परप्लेक्सिटी फार्मूला। ठीक है, सो परप्लेक्सिटी एज अ डिफाइंड वाज 1 over probability, बट इट इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, सो नॉर्मलाइज किस तरह करना है, बाय द रूट ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 वर्ड कोई सेंटेंस है, या टेक्स्ट, रनिंग टेक्स्ट है, लेट्स से आई एम फॉर एग्जाम्पल आसिफ। ठीक है ना, तो इसका जब आप निकालेंगे परप्लेक्सिटी, तो एसेंशली परप्लेक्सिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई पुट अ ब्रैकेट हियर एज वेल, 1 डिवाइडेड बाय, लेट्स से यूनिग्राम से आप निकाल रहे हैं, तो फिर ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, probability of M, probability of Asif. And then since there are 3 words, we have to take the third root. So this normalization is actually quite essential, because आप जब टेस्ट कर रहे हैं आपका लैंग्वेज मॉडल, जो टेस्ट सेट है उसके डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं, कुछ 2 वर्ड्स के हैं, कुछ 1000 वर्ड्स के हैं, एंड सो ऑन, सो यू नीड टू नॉर्मलाइज। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन सिंस वी हैव, इट्स काइंड ऑफ ए ज्योमेट्रिक मीन टाइप की चीज बन रही है, बिकॉज यू हैव प्रोडक्ट्स, so products की normalization you take the root, सर nth स्क्वायर root। रूट लेंगे या पावर? जी सर स्क्वायर रूट लेंगे इधर या? नहीं, 1/3 क्यूब रूट, 3 वर्ड्स है ना, जितने वर्ड्स होंगे उतना रूट होगा। ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ? सो इफ यू हैव अ लॉन्गर सेंटेंस, लेट्स से 10 वर्ड्स हैं, तो देन ऑफ कोर्स जो आपका पावर होगा 1/10 का होगा। ठीक है, 10th रूट। ठीक है, तो ये भी क्विज में जो क्वेश्चन था ये मैंने अपडेट कर दिया, क्विज 3 था शायद ये, तो आई अपडेटेड दिस ऑन LMS। Okay. Any questions? All right. So going back to text, if the words are repeating for perplexity, as you know, if you want to compute the language model, repeated words have repeated probabilities. So let's say आपके पास कोई word है, I like the movie, for example. तो इसका जब आप probability निकालेंगे तो like 2 दफा आएगा, language modeling है। ठीक है, all right.
So, okay, so we are going to start with, again, classification. So the best classifier, C star, and of course we said this is maximum a posteriori estimate, is given by argmax for all possible C of probability of W1 to WT, let's say the T words in the sentence or running text that you want to classify, given C, and then probability of C. So this is the Bayes classifier, but in this case, the first expression on the right hand side is the class specific language model. So in other words, ये जो probability निकालनी है W1 to WT is computed for class C. ठीक है? अब ये लैंग्वेज मॉडल क्या हो सकता है? ये आपके पास यूनिग्राम हो सकता है, बाईग्राम हो सकता है, ट्राईग्राम हो सकता है, इन जनरल एन ग्राम हो सकता है. दिस आर ऑल अप टू यू. But whatever we have studied in language modeling can be used to estimate this probability. Once you have estimated this probability, multiply it with the prior probability of the class, and for the class for which this combination is the maximum is the class for this particular sentence or running text. ठीक है? तो ये आपके पास language modeling based classification है. So in general, what do you have? You have training data. Let's say मेरे पास जो C है, in let's say 2 classes हैं, class 1, 3 कर लेते हैं, 2 and 3, ठीक है? There are 3 possible classes for C, ठीक है? आपके training data में फिर you will have 3 subsets. So कुछ documents होंगे class 1 के होंगे, कुछ documents class 2 के होंगे. Data size, total size let's say is n, ठीक है? मतलब, and you can say documents. As I said, documents could be words, sentences, paragraphs, depending on whatever is the unit of consideration. ठीक है? और फिर let's say n1 would be number of documents in class 1, n2 would be number of document in class 2, and n3 would be number of document in class 3, and of course n1 plus n2 plus n3 would be equal to n. ठीक है ना? So आपने जो लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करना है वो N1 के लिए, जब N1 डॉक्यूमेंट यूज करके आपने क्लास 1 के लिए लैंग्वेज मॉडल बनाना है, N2 यूज करके, N2 डॉक्यूमेंट यूज करके आपने क्लास 2 के लिए लैंग्वेज मॉडल बनाना है, एंड सो ऑन. एंड देन गिवन ए न्यू डॉक्यूमेंट, कोई भी आपका नया डॉक्यूमेंट है, आपने उसको 3 दफा ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, ये कोई नया डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसमें T वर्ड्स थे, ठीक है? एक दफा आपने 1 के साथ करना है, P1, ठीक है? इसी तरह दूसरी दफा आपने 2 के साथ करना है, और एक आपने 3 के साथ करना है. और जिसके साथ, जिस क्लास के साथ ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो वो आपका लेबल होगा. ठीक है? So this is how you do classification using a language model. Any questions here? So after this, we move on to naive Bayes. ठीक है? So naive Bayes classifier is a general purpose classifier that can be applied for any classification problem. And in general, in naive Bayes, what we have is features. ठीक है ना? And those features we represent by x1 to xm. So m features हैं आपके पास.
ठीक है. So of course different problems would have different features, but here our focus is text classification. So usually these features, or mostly these features, would represent words or distinct words in the vocabulary. ठीक है. And the usual model that we assume for these features, which are of course variables also in a probabilistic sense, uh, is the multinomial model. ठीक है. So multinomial model में basically हम क्या करना चाह रहे हैं? We want to find the probability of the joint x1 xm. ठीक है ना. तो इसकी हम probability निकालना चाह रहे हैं. तो multinomial model has some assumptions और उसका कोई एक framework होता है. तो so first of all, framework, actually I discussed all of this last time as well, but I'm going to repeat it here again. So एक तो ये है कि जो भी feature है, it's basically we are counting the number of times that we see a particular feature in some fixed number of events. ठीक है. So in the context of text, as I said, x's, for example, would represent a specific word in the vocab. ठीक है. And similarly x2, x3 and xm would be another word. And so the variable x1 would capture the number of times that word, you can say now I'm going to use x1 as the feature, and the feature is about word 1. ठीक है. Seen in running text of length t. ठीक है. So it's the number of times that we see a particular word, which in this case is w1, in the running text. ठीक है. So similarly for x2, x3, x4 till xm. So आपका जो डेटा सेट होगा, लेट्स से मैं आपका डेटा सेट कोई बनाना चाह रहा हूँ, आपके पास रोज में डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉलम्स में ये फीचर्स हैं. सो लेट्स से x1 पहला कॉलम है, x2 दूसरा कॉलम है. ठीक है. एंड सो ऑन. और एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं. लेट्स से पहले डॉक्यूमेंट में x1 के 2 वर्ड्स थे और x2 के कोई भी नहीं थे. ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया. दूसरे डॉक्यूमेंट में x1 के लेट्स से 0 थे, x2 के 1 थे, एंड सो ऑन. तो इस तरह का आपका डेटा सेट होगा. ठीक है. So of course all of the values would be non-negative, 0 or higher, because multinomial में क्या होता है, आपने t ट्रायल्स में देखना है कितनी दफा कोई इवेंट हुआ है, और इसमें इवेंट्स क्या है, वर्ड का अकरेंस. ठीक है. सो t ट्रायल्स कौन से हैं? लेट्स से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है t इज इक्वल टू 100. इसका मतलब है कि उसमें 100 वर्ड्स हैं. 100 दफा मैंने एक डाइस रोल की जिसमें m पॉसिबल आउटकम्स थे, और फिर मैंने काउंट किया कि फर्स्ट आउटकम कितनी दफा आया, सेकंड आउटकम कितनी दफा आया, थर्ड आउटकम कितनी दफा आया, फोर्थ कितना आया और एम्थ कितनी दफा आया, और वो मेरा आपका डॉक्यूमेंट बन गया. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द मॉडल बिहाइंड द multinomial model, and which is used to model text. अब now you notice that हमने एक रनिंग डॉक्यूमेंट है which consists of words in sequence को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. and vector had a fixed length m. So vector of length m. ठीक है. So all documents are a vector of length m, although the documents में words जो होंगे वो different हो सकते हैं, t different हो सकता है. पहले डॉक्यूमेंट में 100 होंगे, दूसरे में 200 होंगे, बट उनकी जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो फिक्स्ड है.
और उसमें हमने काउंट्स लिखे हुए हैं हर एक वर्ड के, ठीक है। सो दिस एंड इसमें सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इन जनरल इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली एंड ट्रेडिशनली दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड्स क्यों, कि जो सारा जो वेक्टर था इट्स जस्ट ए काउंट ऑफ ईच वर्ड दैट अकर्स, एंड ऑफ कोर्स कोई सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नहीं रखी हुई, तो आप समझें कि एक बैग में आपने वर्ड्स डाले हुए हैं, दो वर्ड डाले हुए हैं x1 के, एक वर्ड डाला हुआ है x2 का, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज वेयर द बैग ऑफ वर्ड और BOW terminology comes from. But in general, it's a vector representation, a specific type of vector representation in which we have counts of words for each distinct word in the vocabulary. Is this clear? Okay. अब तो ये तो खैर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी। डॉक्यूमेंट कोई भी आपके पास हो, वोकेबलरी आपने निकाल ली पहले, और उस वोकेबलरी के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट में जितने हर एक वर्ड्स आ रहे हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, कितनी दफ़ा वो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसका जो अंडरलाइंग जो मॉडल है वो मल्टीनोमियल मॉडल है, और मल्टीनोमियल मॉडल का जो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, सो लेट्स से इफ यू हैव this multinomial x1 to x m, how do you compute this? It's basically ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर ऑफ m, ठीक है। एंड आई विल यूज द सिंबल म्यू जो ट्रेडिशनल यूज होता है, म्यू आई, ठीक है, मल्टीप्लाई म्यू आई देन रेज टू पावर ऑफ एक्स आई। तो ये फॉर्मूला है टू कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन द मल्टीनोमियल मॉडल। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, मेरे वोकेबलरी साइज लेट्स से 3 है सिर्फ, सो लेट्स से m इज इक्वल टू 3, और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह लिखेंगे हम, म्यू 1 रेज टू पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय म्यू 2 रेज टू पावर ऑफ 2, ठीक है। ये क्या होगा, सर इसमें ज़रा कंफ्यूजन हो रही है, लाइक वी स्टिल डूइंग नई बेस, राइट? जी तो वी आर डूइंग नाइफ उसमें बेस। हम बेसिकली अभी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड गिवन अ क्लास, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम। जी जी दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द यूनिग्राम्स, यू कैन से, इन अ सेंस, ये वही कर रहे हैं हम अभी। जी, अब एक्चुअली कर वही रहे हैं, बट मैं आपको जेनरिक नाइफ बेस बता रहा हूँ, और उसके बाद यू विल सी दैट दिस इज सिमिलर टू और एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द लैंग्वेज मॉडलिंग दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। This particular model of multinomial naive Bayes would be identical to the language modeling approach that we used earlier on. तो just hold on a couple of more minutes, थोड़ा सा ये clear हो जाएगा। I know notations थोड़ी सी ज़्यादा हैं। So
तो कैरेट x1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय म्यू 2, ठीक है, रेज टू पावर ऑफ x2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय म्यू 3 रेज टू पावर ऑफ x3, ठीक है. So x1 of course is 0, ठीक है, x2 is 2 and x3 is 1, ठीक है. और म्यूज क्या है? म्यूज आपके एस्टिमेट्स हैं. So mu for example, mu1 is the estimate for the probability of w1, ठीक है. ऑफ कोर्स गिवन द क्लास मैं अभी लिख नहीं रहा, ऑफ कोर्स क्लास स्पेसिफिक ही होगा मॉडल हमेशा, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. स्पास जो भी मॉडल्स म्यू बनेंगे हर एक क्लास के लिए अलग अलग निकलेगा, ठीक है. एंड दिस वी मेंशन लास्ट टाइम इज सिंपल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट से आप निकालेंगे. यू बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड वन अकर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है. सो नंबर ऑफ टाइम्स w1 occurs in class C, ठीक है, divided by total number of words in class C, ठीक है. तो ये म्यूज हैं. अब ये जो मैंने अभी ये लिखा है, ये इट्स बेसिकली estimating the probability of that word given a particular class. So यूनिग्राम मॉडल टाइप की चीज है. वन वर्ड गिवन द क्लास, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस, लेट्स से अब vocabulary size, let's say मैं कहता हूँ, let me take an example and show it to you. Let me see. I like the movie, ठीक है. तो ये तो खैर एक सेंटेंस है, बट लेट्स से कि मेरे वोकेबलरी में एक दो वर्ड्स और भी हैं. लेट्स से मेरे पास आई है, लाइक है, मूवी है, और मेरे पास लेट्स से दी है, और लेट्स से मेरे पास ए भी है, और लेट्स से ग्रेट भी है. 6 वर्ड्स हैं, ठीक है. सो अब मैंने फीचर मेरे पास एम कितने हैं? 6 हैं, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेरे पास वैल्यूज क्या होंगी? x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, x2 की 1 है, x3 की 1 है, x4 की 1 है, x5 की 0 है, और x6 की 0 है, ठीक है. सो नाउ when you apply the when you want to compute that probability, what do you do? So basically हमने कहा था x1 is word 1. So basically मेरे पास क्या है? probability of word 1 raised to power of 1, ठीक है, multiplied by probability of w2 raised to power of 1 multiplied by probability of w3 raised to power of 1 multiplied by probability of w4 raised to power of 1 multiplied by probability of w5 raised to power of 0 multiplied by probability of w6 raised to power of 0. So what is anything raised to power of 0? 1. That is 1, right? इसका मतलब है कि वो फैक्टर उसमें आ ही नहीं रहा, वो वर्ड थे नहीं उसमें, ठीक है ना. सो व्हाट डू यू गेट एट द एंड ऑफ द डे? बाकी सारे 1 हैं. You get at the end of the day probably w1 multiplied by probably w2 multiplied by probably w3 probability of w4. So this is essentially what your unigram language model, ठीक है ना. तो बाकी जो 2 थे उनकी पावर 0 थी, वो वर्ड आ ही नहीं रहे उस डॉक्यूमेंट में. जब किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी में वो इम्पैक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है.
ऑफ कोर्स इसमें जो थोड़ा सा एस्टिमेट हमने जो निकाला है, खैर एग्जैक्टली वो भी सेम है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और उसमें बस एक है कि वी गो अहेड एंड यूज एडवांस स्मूथिंग हेयर बिकॉज इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, while in language modeling that did make a big difference because usually हम bigram trigrams और higher orders पे जा रहे होते हैं. Okay, so advanced smoothing is fine for estimating these probabilities. So similarly, let's say जैसे मैंने पहले एक sentence लिखा था, I like movie for example. तो like दो दफा आ रहा है, लैंग्वेज मॉडलिंग में भी दो दफा प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी W1, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ W, लेट्स से लाइक की नंबर था 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 दो दफा लिखा जाएगा. सो सिमिलरली हेयर W3 जो आपका X3 होगा उसका काउंट 2 होगा. जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 रेज टू पावर ऑफ 2 हो जाएगा. इट्स द सेम थिंग. ठीक है. सो दिस इज द मल्टीनोमियल नाइव बेस. All naive Bayes, this is by the way the most popular naive Bayes for text classifier. उसमें मॉडल ऑफ कोर्स क्या है, काउंटिंग वाला मॉडल है. वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए वर्ड अकर्स. So sometimes we do some further tweaks as well. So I think I should mention them. So one is the binarized multinomial naive Bayes. So binarized multinomial naive Bayes में हम ये करते हैं कि x1 का जो भी xi है हमारे पास, before it was any value greater 0 or greater than 0, integers of course, but binarized में we say that 0 or 1 only, meaning that presence or absence only. ठीक है. और then using this we do the rest of the processing as usual. In other words, multiple words की occurrence हम count नहीं करते. So for example, जब हमारे पास कोई इसका डेटा सेट बन रहा है x, कोई डेटा सेट है, तो ये even if a word occurs more than once we'll just count 1. ठीक है. So we'll just count it as 1. और इसी numbers को फिर use करके आपने फिर probabilities भी estimate करनी है. So this is called a binarized multinomial naive Bayes. So for some application, this one does slightly better. For example, in many early naive Bayes classifiers for spam filtering, it was found that the binarized version of multinomial naive Bayes did better. ठीक है. मतलब multiple occurrences of word were not helping improve performance of spam filtering, email spam filtering. As long as a word occurs, for example, जैसे मैंने दिया example बताया था, कोई नाइजीरिया आ रहा है या मनी आ रहा है, as long as उस तरह का कोई word आ गया, that is sufficient for us to sufficient evidence for us to classify that as spam. Multiple occurrences not important. But in other application, for example, sentiment classification, उसमें multiple occurrences does play a role. जैसे मैंने ऊपर लिखा like दो दफा लिख दिया, या I love मैंने दो दफा लिख दिया, तो that does have some impact. तो उसमें multinomial, standard multinomial naive Bayes is generally considered better. ठीक है. इसके अलावा एक और मॉडल भी है. बोथ ऑफ दीज मॉडल जो मैंने अभी ऊपर मॉडल बताए ये वर्ड मॉडल्स हैं. वर्ड मॉडल्स कह लें या कह लें कि बाइनोमियल या मल्टीनोमियल मॉडल्स हैं. ठीक है. द अदर जो होते हैं बर्नूली मॉडल्स भी हो सकते हैं. So Bernoulli models में क्या होता है कि you just counting that particular event. For example, so basically Bernoulli model में क्या होगा? So for example, आपके पास document x1, x2, x3 कोई है आपके पास, ये 1 है, let's say ये 0 है और ये 1 है. अब इसकी जो estimates आप निकालेंगे, it's not based on the words that you see. It's based on the document that have 1 in it. ये एक document है ना, एक row. So
let's say if I want to find the probability of W1, which is the first feature, I would simply say the number of dogs in which W1 occurs divided by total number of dogs n. ये डॉक्यूमेंट लेवल मॉडल्स है, वर्ल्ड लेवल मॉडल्स नहीं है. वाइल मल्टीनोमियल और जो ऊपर बाइनोमियल, जो बाइनराइज, एक्चुअली बाइनराइज नॉट टोटली बाइनोमियल, उसको हमने बाइनराइज कर दिया है. एंड दीज आर बर्नौली टाइप ऑफ मॉडल्स कि हमने डॉक्यूमेंट लेवल पे हम देख रहे हैं और प्रीवियसली हम वर्ड लेवल पे देख रहे थे. तो ये कुछ वेरिएशंस है नाइव बेस की, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसमें आपको ये मिलेंगी. मे बी स्लाइटली डिफरेंट नेम्स की होंगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ी सी वेरिएशंस हैं. और समटाइम्स वन ऑफ द these variation might do slightly better. But the most common, as I said, is the multinomial naive Bayes for text classification. Other variations क्या है? Binarized multinomial naive Bayes. Sometimes that is also said as binomial. और फिर, and all of these are word models. And then we have the document models, जिसमें आपने जो estimates करने हैं और document level पे करने हैं. ठीक है? So, any questions? I know this has mixed a bit of probability and some text classification and other things. So, by the way, इसकी मेरे पास ना slides भी हैं from machine learning. I think I will post those as well. But the point is, I don't really want to confuse you guys too much with the theory, because NLP is more of a applied topic. But जो machine learning की जो slides मैंने बनाई हुई थी, तो वो शायद मैं share कर दूंगा later on. But ये book में भी discuss किया हुआ है. So if you want to go into that, go into the book. You can read the book as well. So any questions so far? Okay, we have, I have mentioned learning as well, slightly here and there, but depending on the model, the formula might be slightly different. For the multinomial naive Bayes, the formula is like the one that we saw for language modeling. Okay? So basically क्या था कि if you want to find the probability of W1, is basically the count of, for example, W1. Obviously, these models are for class specific, given C, of course. Okay? So C divided by sum for all I of count of WIC. तो ये फॉर्मूला होगा if you want to write it in more rigorous sense. ठीक है, और ये वही लैंग्वेज मॉडलिंग वाला फॉर्मूला है, वर्ड बेस्ड है. तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस वर्ड अकर्स इन टॉपिक और क्लास सी, एंड डिनोमिनेटर में ऑल वर्ड्स इन क्लास सी, द काउंट ऑफ ऑल वर्ड्स इन क्लास सी. ठीक है, और इसकी एडवांस स्मूथिंग करनी है तो उसी तरह ही होगा, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ऑल वर्ड्स जो हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने हैं, वही वोकैबुलरी है, तो वो प्लस वी हो जाएगा. इफ आई वांट टू राइट दिस, एडवांस स्मूथिंग में आपके पास काउंट ऑफ W1 C plus 1 divided by of course sum for all I count of WI C plus V. ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड, बिकॉज हर एक वर्ड को आपने एक ऐड कर दिया. And advanced smoothing is fine for classification. You don't have to go beyond that.
All right, so now I think let's me move on to evaluation. So how do you evaluate a text classifier? Essentially, this is a classifier. Just remove the text. Any classification problem, how do you evaluate any classification problem? We have the usual set of measures, and most of you or many of you may already know many of these. One is, of course, accuracy, and related to that is basically error rate. Okay? So what is accuracy? So basically number of correct classifications divided by ठीक है. So this is accuracy, and error rate of course is number of misclassification divided by total number of classifications. ठीक है. So this is the most common measure for all classification problems and also for text. But the more robust measures are the precision recall and F1 measure, F measure, which I believe many of you already know as well. So let me quickly revise that as well. So precision, recall, and F measure. Okay. So precision basically so maybe I think before I go into this, let me वो एक contingency table जो बनता है वो draw कर देता हूँ. So contingency table. So okay, table को मैं rows में आपका actual हो जाएगा और columns में predicted कर देते हैं. So rows are actual, columns are predicted. ठीक है. और लेट्स से बाइनरी क्लासिफिकेशन है. ठीक है. तो लेट्स से बाइनरी क्लासिफिकेशन कह ले तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव कह लेता हूँ. ठीक है. सो ये पॉजिटिव है लेबल और फिर नेगेटिव लेबल है. ये दो कॉलम्स हैं एंड कॉलम्स आई सेड इज प्रिडिक्टेड. और इसी तरह फिर रोज पहला कॉलम होगा. दिस इज क्या था, टी नहीं होगा, पॉजिटिव. सो दिस इज एक्चुअल एंड देन नेगेटिव प्रिडिक्टेड. So if you have column में is predicted, if you have predicted as positive and actual was also positive, then this is a true positive. ठीक है. So number of examples that were predicted as positive while they were actually also positive, this is a true positive. And move on to the right, which means that predicted as negative while they were actually positive. तो ये फिर क्या होगा? पहली तो बात ये है कि predicted negative था, actually positive था. So this is an error. So error would always be a false. ठीक है ना. तो false हमने क्या कह दिया इसको? पॉजिटिव कहा कि नेगेटिव कहा? हमने पॉजिटिव कहा. ठीक है ना. तो दिस इज एन एफपी. सो सिमिलरली हियर जो पहला होगा ये फॉल्स नेगेटिव है एंड देन वी हैव द ट्रू नेगेटिव. ठीक है. तो ये कंटिंजेंसी टेबल है फॉर टू क्लास प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव कोई और क्लासेस भी हो सकते हैं, spam or non-spam and so on. And based on this, you can compute precision recall and F measure. So in general, of course, true positive plus false positive plus false negative plus true negative is equal to N, which is number of documents to be tested.
ठीक है, हम इवेल्युएशन कर रहे हैं ना, सो देयर हैज टू बी अ टेस्ट सेट, and based on this your precision is basically the true positives divided by all positives that were predicted by the classifier, which is true positive plus false positive. ठीक है ना, तो क्लासिफायर ने जो ट्रू पॉजिटिव बताए थे वो तो सही बताए थे, बट कुछ और भी पॉजिटिव बताए थे. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स दैट द क्लासिफायर गिव. सो दिस इज प्रिसीजन. In other words, this is the fraction of corrects or positives in all positives that were outputted by the classifier. ठीक है, और इसी तरह रिकॉल जो है वो बेस्ड ऑन ट्रू लेबल्स हैं. तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव्स. फॉल्स नेगेटिव्स क्या थे? एक्चुअली वो पॉजिटिव्स थे. ठीक है ना, तो ओवरऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स हमने कितने पॉजिटिव ढूंढे. ठीक है ना, तो दिस इज रिकॉल. एंड इन जनरल इन मोस्ट क्लासिफिकेशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन दोनों में ट्रेड ऑफ होता है. इफ देर इज सम पैरामीटर इन द एल्गोरिथम, बाय द वे नाइट बेस में सच कुछ तरह का पैरामीटर कोई नहीं है, but in many other algorithms parameters होते हैं. By changing those parameters you might be able to tweak one of these while the other would tend to decrease. So precision increase करने की कोशिश करेंगे तो recall कम हो जाएगी. ठीक है, तो precision क्या चीज है कि जितने classifiers positives कह रहा है उसमें से मेरे correct positives कितने हैं, that is precision. और recall में एक्चुअली कितने पॉजिटिव में से मेरे क्लासिफायर ने सही पॉजिटिव कितने निकाले. ठीक है, so these two measures, as I said, are kind of complementary, meaning that increasing one often causes the decrease of the other. So usually इन दोनों को फिर हम combine कर लेते हैं in what is known as the F measure, which is a weighted harmonic mean of the two measures. ठीक है, so F measure का जो जनरल फॉर्मूला जो है वो बता देता हूँ चले. So basically जनरल फॉर्मूला is बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 into precision into recall then divided by beta square into precision plus recall. ठीक है, ठीक है. And the most common beta that is used, beta of course is a weighing parameter that weighs how much we weigh precision as opposed to recall. उन दोनों का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है. The most common beta is equal to 1. In this case we call this the F1 measure, और ये फिर बन जाएगा 2 into precision into recall divided by precision plus recall. ठीक है, सो बीटा स्क्वायर जो होगा वो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, ऊपर नीचे ऑफ कोर्स 1 ही रह गया. सो दिस इज आवर यूजुअल F1 मेजर, जिसमें काइंड ऑफ हम कहते हैं बैलेंस्ड वेट दे रहे हैं दोनों को, प्रिसीजन को, रिकॉल को. एंड मोस्ट एप्लीकेशंस के लिए इस तरह ही देते हैं. आई हैव नॉट सीन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें हम कोई और डिफरेंट वेट दे रहे हैं अदर देन 1. So this measure then combines both precision and recall into one measure. And in general, F1 measure would be high when both precision or recall are close to one another. ठीक है, मतलब let's say आपके पास precision 0.7 है और recall let's say 0.68 है. So this would probably give a better F1 measure as compared to let's say आपकी precision 0.9 होगी है और जो recall है 0.3 है for example. So this would not give a high F measure. Usually have F measure high उस वक्त होगा जब दोनों precision recall close to each other होंगे. And in most practical cases जो F1 measure जिसका
सबसे हाई होता है जिस मॉडल का, वो हम प्रिफर करते हैं. Although in some applications we might have different criteria in addition to these. False positive rate हो सकता है, false negative rate हो सकता है, precision को ज़्यादा weight दे सकते हैं, recall को ज़्यादा weight दे सकते हैं. That depends on our applications. Any questions? So we have about 10 minutes left. So let me, I think, wrap up evaluation before I do anything else. No questions. The example that I gave above was binary classification. Okay, two classes. But of course, there are many applications in which there are more than two classes, multi-class problem. So for multi-class classification, slight modifications have to be made to some of these measures. Accuracy is essentially the same as we defined before. Accuracy, so number of correct classifications divided by total number of classifications. ठीक है, ये तो वही रहेगा. But for precision recall and F measure, remember that precision recall F measure ना class based है. हमने ऊपर पॉजिटिव के लिए निकाला था प्रिसीजन, पॉजिटिव्स के लिए निकाला था रिकॉल, और पॉजिटिव्स के लिए निकाला था एफ मेजर. इसी तरह नेगेटिव के लिए भी निकाल सकते थे. बट सिंस देयर वर ओनली टू क्लासिफिकेशन, एक का निकाल लें तो एंटायर प्रॉब्लम वाज कवर्ड. बट इफ यू हैव अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम, so you will have to have you need to modify this operation. और जनरली इसमें दो तरीके होते हैं. ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? सो प्रिसीजन रिकॉल जो ऊपर हमने निकाली थी, प्रिसीजन फॉर एग्जांपल वाज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉर एग्जांपल. तो हमने फोकस हमारा पॉजिटिव लेबल था, पॉजिटिव क्लास, जो कोई क्लास हमने फोकस रखा हुआ था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रू पॉजिटिव. बट कोई और लेबल होता तो इट वुड बी द सेम. सो बट हम किसी और क्लास के बेसिस पे भी निकाल सकते थे. लेट्स से इफ यू आर 10 क्लासेस, हर एक क्लास के लिए आप प्रिसीजन निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कैन डू फॉर हैंडलिंग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. So actually, as I said, there are two ways. You have a macro averaging approach, and then we have the micro averaging approach. So let me mention this, and then I think there's a table in the slides, वो वहाँ मैं दिखा दूंगा आपको किस तरह होता है. So for example, macro में क्या होता है? So we create binary tables for each class. ठीक है, and compute the F measure for each class separately. F measure, precision, recall, all of them separately, and then take the average of all the classes at the end. And those averages can be weighted averages, weighted by the number of examples. ठीक है, so in other words, let's say आपके पास 3 classes हैं, positive, negative and neutral. ठीक है, तो आप फिर जो कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे, एक में आप ये बनाएंगे कि आपके जो प्रिडिक्टेड है फॉर न्यूट्रल पहले, सॉरी फॉर पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, तो उसमें आपका जो कॉलम्स होंगे वो पॉजिटिव होगा और फिर अदर होगा. और इसी तरह आपका जो रोज होंगे, जो एक्चुअल होंगे, वो पॉजिटिव होगा और अदर होगा. ठीक है, सो इफ it was correctly predicted as positive, तो वो सेल भर जाएगा. बट इट वाज नॉट प्रिडिक्टेड as positive, it might be neutral, it might be negative, तो वो अदर्स में डाल देंगे हम काउंट. और इसके बेसिस पे आपके पास एक प्रिसीजन निकल आएगा,
एक रिकॉल निकला आएगा, एफ मेजर निकला आएगा। इसी तरह आपने फॉर नेगेटिव भी करना है, फॉर न्यूट्रल भी करना है, एंड देन टेक द एवरेज। ठीक है, एंड दिस एज आई सेड कैन बी weighted average, where weighted by the number of examples in each class. ठीक है, you can do that as well. So this is macro averaging, and this is generally preferred as compared to micro averaging in most practical applications. But for completeness sake, we'll mention micro averaging as well. So micro averaging जो है उसमें क्या होता है कि we create one contingency table. एक्चुअली वो भी कंटिजेंसी टेबल होता है, बट उसमें बेसिकली ये होगा कि वी हैव करेक्ट, इनकरेक्ट, इसी तरह रोज में भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक आ रहा है तो वो हम करेक्ट करेक्ट का सेल बढ़ा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव ठीक आ रहा है तो फिर भी उसी का बढ़ा देंगे करेक्ट करेक्ट का। और कभी भी इनकरेक्ट होगा, लेट्स से एक्चुअल पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कह दिया, तो वो इनकरेक्ट का हम काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये टेबल किस एक ही टेबल बनेगा पूरे डेटा सेट के लिए, और फिर यू विल हैव जस्ट वन प्रिसीजन, वन रिकॉल एंड वन एफ मेजर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो एवरेजिंग। एक ही टेबल बनता है और उसी से प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर निकलता है। वाइल इन द प्रीवियस केस मैक्रो एवरेजिंग में आपकी जितनी क्लासेस हैं उतने टेबल्स बनेंगे, हर एक टेबल का एक प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर निकलेगा, और फिर बाद में उसका एवरेज हो जाएगा, वेटेड एवरेज भी हो सकता है। So as I said, in most practical cases, macro is preferred, and especially when there is class imbalance. ठीक है, मतलब लेट्स से पॉजिटिव में 90% एग्जाम्पल्स थे, न्यूट्रल में 5% थे, और नेगेटिव में 5% थे। देयर इज अ ह्यूज क्लास इम्बैलेंस, 90% इज पॉजिटिव। तो उस केस में माइक्रो एवरेजिंग वुड गिव यू अ मोर रिलायबल इवैल्यूएशन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? यस सर, सही है। हम मल्टीनोमियल में जो हम x1 x2 ये फीचर्स ले रहे हैं, हम उनको वर्ड्स सिंगल वर्ड्स अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये बायग्राम्स भी हो सकते हैं अगर हम इसको इस तरह से अज्यूम करें? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और यही एक्चुअली मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। देयर कुड बी एनी अदर फीचर एज वेल। So that's the advantage of that is the advantage of having a feature-based model rather than a language-based model for classification. ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। एक तो वही x1 x2 x3 आप वर्ड्स बना लें, W1 W2, और सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन में इमोटिकॉन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आप एक फीचर x व्हाटएवर आप कह दें नंबर ऑफ टाइम दैट यू सी इमोटिकॉन। ठीक है, या लेट्स से कोई स्पैम फिल्टरिंग की कोई प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कि उसका जो एड्रेस है, इज इट फ्रॉम ए ब्लैक लिस्ट और नॉट, यस और नो, 0 1 हो सकता है, वो भी एक फीचर हो सकता है। तो फीचर बेस्ड वुड बी मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस करना था। आज आई जस्ट कंप्लीटेड द इवैल्यूएशन, ऑल्दो ये पहले भी मैं कर सकता था। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट इज राइट, कोई भी हो सकता है, बाइग्राम भी हो सकता है, ट्राइग्राम भी हो सकता है, या कोई और फीचर हो सकता है। x1 जिस तरह मर्जी हम डिफाइन कर लें। अच्छा, टाइम आपका क्विज का हो गया। आई थिंक यू क्विज कैन गो अहेड एंड स्टार्ट।